Hello guys, I am Shubham from Shubha Tutorials. This video is of DBT JRF PYQs of the year 2025. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new results out. This is absolutely free from our side, but it will help us grow. This is the part 1 of this particular video series of the 2025. Let's see the first question. Formation of ATP from ADP and PI occurs during. Okay, ATP formation कब होगा? A is oxidative phosphorylation in mitochondria. Okay, इसमें ATP synthesis होता है, we know that. Confirm, right? Electron transport chain. Then photophosphorylation in leaf. Yes, photophosphorylation means what? Photosynthesis using light for the preparation of food, right? So इसमें भी ATP synthesis होता है. Okay, these are confirmed. Reductive phosphorylation. No ATP synthesis. Esterification. No, ATP formation तो यहाँ पे नहीं होता. As well as phosphoramidation, no, 80%. So choose the correct answer from the options given below. A and B only. Option 1 is the correct answer. Second question. Given below are two statements. Statement 1 is bleeding gums is the symptom of scurvy. Yes, correct hai. Statement 2. Scurvy is caused due to the deficiency of ascorbic acid. Yes, right. Basically vitamin C. Okay, so both the statements are correct. Choose the correct answer. Option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 1 ही answer होगा. Among the allotropes of carbon, dash is the hardest natural substance known, while dash has layered sheet structure. Okay, now I added this question because allotropes of carbon ये important topic है. +2 level में हमने देखा है. राइट अभी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बेसिकली डायमंड होता है. तो डायमंड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 2 and 4. 1 and 3 will be eliminated. Okay, next layered sheet structure. Layered sheet structure ग्राफाइट का होता है and not fluorine. Fullerene is spherical, right? This is fullerene. Graphite layered sheet structure. तो ऑप्शन 4 आंसर होगा. Got it? Very easy. Given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. Assertion A. Solubility of alcohol in water decreases with increase in the size of alkyl group. Correct है. Okay, alcohols में OH group होता है which is polar, right? अभी क्या बोल रहा है? Solubility कम होगा, right? Solubility will decrease when the alkyl group will increase. Okay, right? So this is correct. Alkyl group means what? जो chain है, like carbon numbers, methyl, ethyl, propyl, butyl, ये जैसे जैसे increase होगा तो solubility will decrease. Right ना? अभी जो alkyl group है ये non polar होता है or we can say hydrophobic. So obviously this will decrease the solubility. Let's see the reason R. Alcohols are soluble in water due to hydrogen bonding. ये भी correct है. Soluble है alcohol because of hydrogen bonding. So both of these are correct. Choose the most appropriate answer from the option given below. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. No. Okay, ये आंसर नहीं होगा. Why? Because जो R है वो correct explanation नहीं है. This R explains solubility.
जो बता रहा है अल्कोहल सॉल्युबल है वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेनिंग। बट जो फर्स्ट असर्शन में दिया है दैट इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी कम होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप। इसका रीजन हमने देखा, नॉन पोलर ग्रुप्स का कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, सो बेसिकली हाइड्रोफोबिसिटी इज इंक्रीज और नॉन पोलर कैरेक्टर इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये रीजन एक्यूरेट है, दैट इज नॉट गिवन। ओके, so next option, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Yes, ये आंसर होगा ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 2 आंसर होगा बिकॉज ये R सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। वो चाहिए हमें नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होता है या फिर हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होता है, विच इज नॉट गिवन। ओके, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, this can be confusing, but try to understand properly. Next one, which of the following amino acids limits the flexibility in the polypeptide chain in protein? Very important question. See, amino acid जो flexibility को limit करता है, okay, so this is basically इसका आंसर है प्रोलीन। okay, just remember this, repetition भी है बहुत इसमें। प्रोलीन flexibility को limit करता है of polypeptide chain. Basically this introduces kink और bend। ओके, ऑल्सो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसरप्ट अल्फा हेलिसेस। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज रिपीटेशन वी हैव सीन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स कैन बी यूज्ड टू माइक्रोस्कोपिकली डिटेक्ट प्लाज्मोडियम एसपीपी इन द ब्लड स्मीयर्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स? अभी प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, राइट, मलेरिया। तो which stains are used? Acid fast stain, no, this is used for mycobacteria. Iodine stain also, no. Giemsa stain, yes. Gram stain तो bacteria, no. So option third answer होगा Giemsa stain. Okay, just remember, I hope you are familiar with this blood smears and plasmodium, important है बहुत। Match the following है, list 1 with list 2. This is also easy to solve. Okay, see, जो D है ना, DNA replication, इसका आंसर होगा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ओके, D3, तो D3 ऑप्शन एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। दैट्स इट। ओके, अब ये प्रमोटर, प्रमोटर का B1 है, DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, राइट ना। प्रमोटर पर पॉलीमरेज बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, राइट। सो B1, A is 4, that is exon. Exon, we know this, sequences in split RNA. A4, confirm. And C2, this is something new, you have to remember, Severo-Ochoa enzyme, इसका होगा polynucleotide phosphorylase C2। Okay, you saw it is very easy to answer, single option से आप आंसर कर सकते हो। Next one, which of the following statement is true for histones? Okay, about histones, we know histone DNA binding protein है, right, DNA binding proteins। ओके, तो अभी DNA तो नेगेटिवली चार्ज है, राइट ना। सो ये प्रोटीन्स कैसे चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज, राइट, सो दैट दे कैन बाइंड विद नेगेटिवली चार्ज DNA। ओके, सो सी द ऑप्शन नाउ, हिस्टोन्स आर रिच इन aspartate and glutamate, नो, नेगेटिवली चार्ज है aspartate and glutamate। The eukaryotic cell generally have 3 major classes of histones, no,
5 क्लासेस होते हैं हिस्टोन्स में, राइट? दोज आर H1, H2A, H2B, right? Then H3 and H4. Okay? Different histones have identical structures? No. Different histones have different structures and functions, also different. Histones are rich in arginine and lysine. Yes. Option 4 आंसर होगा. Arginine, lysine positively charged amino acids है. अभी देखो, जो 1 है and 4 है, ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है, राइट? इसमें निगेटिवली चार्ज दिया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, कंफर्म है, राइट? व्हेन यू एलिमिनेट 1, 4 विल बी द आंसर, बाकी सब तो रॉन्ग है. नेक्स्ट वन अगेन मैच द फॉलोइंग. दिस आर वेरी इजी टू सॉल्व, राइट? अभी लैक्टोबैक्टीरियस जो है डी प्रोबायोटिक है, ओके, प्रोबायोटिक. तो डी वन प्रेजेंट इन 2 ऑप्शंस. डी1 के साथ C2 भी हुआ कंफर्म, बिकॉज दोनों में ट्रू है. C2 दैट इज अजोस्पाइरलियम बायो फर्टिलाइजर, ओके. अभी this might you be knowing or not, but I am familiar with this. Clostridium botulinum, this is used for cosmetic treatment, okay. Botox, Botox ऐसा यूज होता है कॉस्मेटिक में, so that is basically Clostridium botulinum. This is used in cosmetic treatment. तो A का 3 चाहिए, ऑप्शन 1. एंड जो बैक्टीरियल SPP है is bio remediation, okay. So A3 ऑप्शन 1 present है with D1. Got it? This is how you can answer, right? Last question. In Sanger sequencing reaction, the exact function of the dideoxynucleotide is. This is also very important. Sanger sequencing. अभी Sanger sequencing को chain termination भी बोलते हैं, right ना? Because dideoxy means what? Dideoxy means what? OH होता ही नहीं है उसमें, सिर्फ HH होता है, राइट? अगर OH है तो ये एक्सटेंशन करता है, पॉलीमराइजेशन, बट H कैन नॉट डू दैट एंड दे डू द चेन टर्मिनेशन. तो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या है? टू स्पीड अप द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन? नो. टू इंक्रीज द फिडेलिटी ऑफ द पॉलीमरेज? नो. टू इंक्रीज प्रोसेसिविटी ऑफ द पॉलीमरेज? नो. टू टर्मिनेट द एक्सटेंशन रिएक्शन? यस. नाम ही है इसका, चेन टर्मिनेशन, राइट? सेंगर सीक्वेंसिंग को हम चेन टर्मिनेशन बोलते हैं, बिकॉज ये डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड टर्मिनेट करते हैं एक्सटेंशन रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन को, ओके. तो ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.